Very good morning, one and all. On behalf of NIEPID Navi Mumbai, myself, Clelia Kiran Paulos, coordinator of the program, welcomes you all to the 3 days online CRE on applied behavioral analysis. On this occasion, I like to express my sincere gratitude towards our patron, Sri B.V. Ramkumar sir, the director of NIPID Secunderabad, and to Dr. Ravi Prakash Singh, the officer in charge, NIPID Navy Mumbai, for allowing us to conduct the program. Now, I request our officer in charge, Dr. Ravi Prakash Singh sir, to inaugurate the program. Thank you very much, ma'am. And on the behalf of NIPID Regional Center, Navi, Mumbai, I welcome you all for this 3 days online continuing rehabilitation education program on applied behavior analysis. आप जो 3 दिन के लिए हमें ज्वाइन किए हैं, इसके लिए आप सभी का स्वागत करते हैं. और मैं सबसे पहले आई एम थैंकफुल टू द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया who always allow us to conduct such programs and give the CRE status, जिसके कारण से जितने भी rehabilitation professionals हैं, those who wants to renew their CRR register, तो वहाँ पे उनको CRE points earn करने का मौका मिलता है. This is the 4th program of this financial year from April, and then I'm also thankful to our respected officiating director, Sri B.V. Ramkumar sir. Under his leadership, he always motivates us to undertake such program. I'm thankful to Dr. Priyanka Jain madam that in a very short span of time, she agreed to take the session. She is very experienced person in the particular topic. And not only she agrees, but she is with her whole team and given us support so that more and more people would be able to learn about ABA. So thank you very much, ma'am. We are very much grateful that and privileged also that you are here with your team and you are supporting us, and definitely we are eager to learn a lot from you and your team on this particular topic. I also congratulate the coordinator, Miss Clelia. She did wonderful job to arranging such national and international speakers who are very much experienced and directly dealing with the clients on this particular topic. So हमारे पास बहुत सारे देश और विदेश से जो हमारे रिसोर्स पर्सन है वो जुड़ेंगे, और जो विषय है आपका अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, जिसको हम हिंदी में प्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण कहते हैं, उस पे चर्चा करेंगे. और हम ये आशा रखते हैं कि इस 3 दिन के जो कार्यक्रम है इससे आप लाभान्वित रहेंगे. मेरा केवल एक ही रिक्वेस्ट है स्पीकर्स से कि प्लीज बी बाइलिंगुअल, बिकॉज मेनी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री. सो उनको थोड़ा जो है अगर केवल इंग्लिश रहेगा तो समझने में दिक्कत हो सकता है. सो दैट इज ओनली माय रिक्वेस्ट, एंड not taking much time, now over to you, Clelia madam, and thank you once again and welcome you all. Thank you, sir. Now, I like to give few guidelines to the participants for the program. The program will be fully recorded. Participants are not supposed to on mic or camera unnecessarily, and you are allowed to raise the hand icon, and you are not requested to share your screen. There will be an assessment link by the end of the day that will be shared after the sessions, and for the morning and afternoon there will be attendance link will be shared during the sessions. And today's schedule is divided into 4 and 2 sessions in the morning and 2 sessions in the afternoon. As per our schedule, our presenter of our first session is Dr. Priyanka Babu, who is a BCBAD with diploma in autism and a graduate in behavior analytic coursework from University of North Texas in United States of America. Her medico-educational skills
are now used to disseminate evidence-based interventions and trainings for working with children with developmental difficulties. She is the founder, director of a non-profit CREA, that is Center for Research, Intervention and Analysis in Delhi, NCR. CREA provides evidence-based intervention services to families of children with developmental disabilities. Dr. Priyanka feels passionately about acceptance, respect, compassion-based therapies as a foundational skill for all stakeholders. She is actively trains and conducts workshops and webinars and short courses, along with in house trainings, and is leading the field with culturally relevant digital trainings. Dr. Priyanka has taught in colleges, universities, and schools to promote the mission of expanding and integrating teams to work for children with challenging. She also published in international journals. Her vision is to create a network of providers to make compassionate, comprehensive, collaborative, and creative care available to children with needs. Here, Madam will be sharing her knowledge on the topic Applied Behavior Analysis and Early Intervention. I welcome you, ma'am. Thank you, Clelia. Thank you for inviting us. And I come here as a representative of collaboration of behavior analysis speakers. It was short notice, as Sir has truly said. But I think just because the team... Yeah, is this better? I think it was echoing a bit. So I represent that team. We are a group of 8 people who are coming in the next 3 days and speaking to you about applied behavior analysis. हिंदी में थोड़ा सा दिमाग इंग्लिश में ज़्यादा चलता है तो इंग्लिश बार-बार स्विच ऑन हो जाएगी. बट अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है या कोई चीज़ वापस रिपीट करनी है या if you want us to explain again, if you raise your hands, we are happy to speak again. I would also take this opportunity to thank the NIEPID Navi Mumbai to invite us all to disseminate a very strong evidence-based strategy, science, and what it can do for children with autism and developmental disabilities. So, बहुत shukriya, Clelia, for coordinating this, and Sir for inviting us and having us in the next 3 days. They're long 3 days. I hope we can do justice to the many long hours that everybody has taken out for us. So it's long, but we are presenting very, very different things in every session. And we'll try to keep it jitna bhi case-based रख सकते हैं और उसके clinical examples के साथ. ये एक लेक्चर नहीं है, ये एक वर्कशॉप सीरीज है या एक वेबिनार सीरीज है जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट उतना ही इम्पोर्टेंट होगा जितना हमारा. So as we tell you theoretical our experiences, हम चाहेंगे कि आप लोग भी अपने experiences या अपने questions या अपने thoughts इनके साथ हमारे साथ उस theory के पीछे पीछे share करें. तो कोशिश हम ये कर रहे हैं कि over this different sections, we are presenting different concepts and different strategies. Can I start presentation? Yes, ma'am. I can't see. Can you see my whole screen or can you see only the presentation? Ma'am, only the presentation, not the whole screen. All right, perfect. That's exactly what I wanted. Ipshita, in case there is a raise hand or there's a query in the message box and you're still here, please help me, please speak up and help me if Atmika and Ipshita are here.
Clearly, Sure. you could monitor it as well, because as I'm presenting and the screen is shared, I can't see both. Sure. Ma'am, right now we're seeing your PowerPoint screen, if that's okay. It's not slideshow mode yet. Just checking. It's not slideshow mode. Okay, wait 1 second. I'm going to try and go into slideshow again. I can't see. Can somebody help me? I can't see both the group and my presentation together. Clearly? I don't think you'll be able to see both, ma'am. I think in Google Meet, you'll only be able to see the presentation. Okay. Hanji. So we'll keep an eye on the raised hands and let you know. Acha, theek hai. So then I'm just going to speak to the wall and then intermittently break and see if people are still awake or not awake. All Hanji. right. Theek hai. Let me try this then. Okay, so today I present to you applied behavior analysis. I'm Dr. Priyanka Jain Bhabu. Clearly has already introduced me. I have a board certification from USA. I today introduce to you the science of applied behavior analysis. Applied behavior analysis is something that you've all studied in bits and pieces in your coursework. And ABA has become actually a trend now. जहाँ भी autism का नाम आता है, वहाँ ABA का नाम आता है. But really speaking, applied behavior analysis is actually just a science of human behavior. It's a science which is very, very powerful in overcoming obstacles in learning as well. तो नॉर्मल टाइम में जब हम लोग लर्निंग करते हैं तब अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस यूज होता है, लेकिन स्पेशली ऑन रोड्स दैट आर रफ, मतलब जहाँ पे लर्निंग वैसी नहीं जा रही या डेवलपमेंट वैसा नहीं जा रहा जैसा इजीली निकल रहा होता है, वहाँ पे इस साइंस का यूज पिछले 10 साल 20 साल में बहुत ज्यादा हुआ है और उसमें बहुत रिसर्च हुई है. सो टुडे आई विल इंट्रोड्यूस टू यू what applied behavior analysis is and how it is used in children with autism and early intervention. So applied behavior analysis actually एक science of learning है. Overall, it is useful to the whole human population. अगर आपने एक तवे को हाथ लगाया और वो आपका हाथ जला, तो अगली बार आप जितने तवे देखेंगे, चाहे वो गर्म है चाहे वो नहीं है, they are hot or not hot, you will still not touch it because you were burnt the last time. So this basic learning that is happening and described by by behavior analysis, which was introduced by Skinner, and uske pehle the work has been done by Watson et al. तो इसकी जो स्पेशल वैल्यू आती है ऑटिज्म में, जहाँ पे ट्रेडिशनल लर्निंग थ्योरीज जो नॉर्मल लर्निंग पैटर्न्स है या जो एक नॉर्मल डेवलपमेंटल पैटर्न है, आइदर इन ऑटिज्म, ऑल ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले और ADHD or in any other neurodiverse or delayed population, this becomes even more important because it is a little more scientific and it is little more methodical and it is very, very effective. तो जब ओपन एंडेड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज काम नहीं करती या उनसे ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होती as good as it should be, then applied behavior analysis based methodologies or strategies become very, very successful. Thus, applied behavior analysis now can be successfully used by behavior analysts, of course, वो तो specialists हैं, लेकिन special education, psychology, speech pathology, occupational therapy, even relationships between two people, child and parent, maybe between parent and therapist, हर तरह से अगर हम basic science of human behavioral learning को use करेंगे तो ये काफी successful और effective है.
तो आप ये जाने कि ABA एक साइंस है, इसकी स्पेशल वैल्यू है ऑटिज्म में, और ये एक्चुअली अपने रोजमर्रा की लाइफ में या ऑन आवर डे टू डे लाइफ इट कैन बी यूज्ड बाय many professionals to improve the rate of learning, the quality of learning, and also making it very child specific or person specific. बेसिक अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस ये कहती है कि एक A होता है, एक B होता है, एक C होता है. एक A इज एंटीसीडेंट, B इज बिहेवियर और C इज कॉन्सिक्वेंस. तो पुराने थॉट प्रोसेसेस में अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस कॉन्सिक्वेंस बेस्ड लर्निंग से होता था कि फाइनली जब हम कुछ करते हैं उसके बाद क्या होता है उससे हमारी लर्निंग होती है. लेकिन जैसे जैसे हम प्रोग्रेसिव अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये माना जा रहा है कि ये जाना जा रहा है कि ये सिंपल एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस के बियॉन्ड, आप जब एक पर्सन पे काम कर रहे हो तो उसके अपने सेंसरी डिफरेंसेस, उसकी अपनी बेसिक स्किल, उसकी मोटिवेशन, उसका अपनी लर्निंग हिस्ट्री, और वो कैसे सोचता है या कैसे इन सारी चीजों को बाइंड करता है, और तब कहीं जाके वो अपने बिहेवियर्स करता है. बिहेवियर में खाना पीना, टेंट्रम करना, रोना, लिखना, पढ़ना. फ्रॉम द बिहेवियर एनालिटिक वर्ल्ड, बिहेवियर कैन बी एनीथिंग दैट वी डू. तो now when we talk about applied behavior analysis in the progressive world and the latest current contingencies, it is a combination of motivation, learning histories, sensory differences, how we talk to ourselves, what is our self-talk inside our head, and what do we think and what do we remember and what do we use. तो ये जाने कि अब एक complex ह्यूमन बिहेवियर चेंज हैं और इनको समझने के लिए और इनके साथ काम करने के लिए या इनको यूज करने के लिए बच्चे के ऊपर हमें हर पार्ट को बहुत ध्यान से समझना चाहिए. As far as sensory differences are concerned, an occupational therapy person can teach it much, much better than an ABA person because they are specialized in doing so. But even today, we will talk about a little bit of this over the next 3 days. Any questions so far? I see 3 raised hands. संदीप जी, आपने hand raise किया है. Anybody else? अगर किसी के पास क्वेश्चन है आप अभी अनम्यूट करके बोल सकते हैं. मैम, क्या हमने जो पहले स्टडी करा है बिहेवियर के बारे में, उसमें और अब में कुछ डिफरेंसेस आए हैं? क्योंकि मैं 2007 की पास आउट हूँ, बहुत चेंजेस लग रहे हैं मुझे अभी. There are significant. So, science being a science, it evolves every moment. Every time a research study comes out and people all over are studying more and more, तो जमीन आसमान का फर्क आ जाता है. जैसे हम कहें कि एक पुराने जमाने में जो ब्लड प्रेशर नापने की मशीन थी और अब जो मशीन है उसमें जमीन आसमान का फर्क है. ऐसे ही अगर पुराने जमाने की हम कार्स देखें, उनकी जो मशीनरी होती थी और अब की जो मशीनरी है उनमें जमीन आसमान का फर्क है. दे बिकम मोर एफिशिएंट, दे बिकम मोर यूजर फ्रेंडली, दे बिकम मोर डीप, दे बिकम having more features to help more and more people. एक जमाने में पोलियो वाले लोग गाड़ी चलाने का सोच भी नहीं सकते थे. अब आप सोचें तो the cars have evolved, and like this any science that is evolving वो एक dynamic creature होता है. मतलब वो हर दिन, हर मोमेंट, हर रिसर्च, हर स्टडी, हर टीम के साथ वो बदलता रहता है. तो पहले अगर बहुत सिंपलिस्टिकली कहें तो एक एंटीसीडेंट होता था, फिर बिहेवियर होता था. बिहेवियर्स मोस्टली प्रॉब्लम बिहेवियर्स होते थे, उनको हम रिइंफोर्स या पनिश करते थे और कहानी खत्म हो जाती थी. अब जहां हम देखते हैं वहां हम ये सोचते हैं कि हम वी आर टॉकिंग टू अ पर्सन.
we are working with a child. The child lives in an environment. The environment can have different levels of enrichment. उसमें बच्चे के अंदर अपनी बॉडी में सेंसरी डिफरेंस हो सकता है. उसकी जो लर्निंग हिस्ट्री है वो खाली उस इवेंट के 30 सेकंड पहले या 30 सेकंड बाद नहीं हो रही है. उसकी लर्निंग हिस्ट्री बनी है पिछले 4 साल में. अगर वो 4 साल का बच्चा है तो अगर मैं 50 साल की हूँ तो मेरी पूरी लर्निंग हिस्ट्री 50 साल की. एक सिंपल A, B और C करने से आप सॉल्यूशंस या हेल्प प्रोवाइड नहीं कर सकते. Also in the last 10 years, the motivation that all of us have inside of us has become a very, very important part in applied behavior analysis. तो इसका actually work ही शुरू हुआ about 2000 में on looking at a 4-term contingency. So मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत बदल गया है. इसकी अपनी जो फोकस है, एम्पैथी है, एक जो पुरानी मिथ्स थी ऑफ बीइंग वेरी रोबोटिक, रिजिड, नॉट फ्लेक्सिबल, that all has completely changed, and I will talk a little more about it. Let me explain. Okay, ABA, ma'am, thank you. absolutely. ABA has become now based on, उसका जो फाउंडेशन है वो एक बिल्कुल ही सिंपल 3-term कंटिंजेंसी से बनकर बहुत पर्सन फोकस्ड हो गया है. मतलब वो अंडर जाता है ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड केयर. ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड केयर के अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस में या जनरली 10 की इंग्रेडिएंट्स होता है. सबसे बड़ी, जब हम किसी को केयर प्रोवाइड करते हैं और हम कहते हैं कि हम ABA बेस्ड वर्क करेंगे, तो हम ये ध्यान रखेंगे कि हम उसको लीड कर रहे हैं और जिसके साथ भी काम कर रहे हैं उनसे अपना कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं. और जो बच्चा है या जो बड़ा है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं वो अपनी थेरेपी को लीड कर सकता है और उसके कम्युनिकेशन पे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए. दूसरा, हमेशा जिसके साथ काम कर रहे हैं, जिस टीम के साथ, चाहे वो थेरेपिस्ट की टीम हो, पेरेंट की टीम हो, डॉक्टर्स की टीम हो, देयर इज अ कंटिन्यूअस एंगेजमेंट बिटवीन them and ABA personnel. Engagement becomes very, very important. Training, of course, एक बिल्कुल bottom line है. अगर आप continuous train नहीं कर रहे हो अपने staff को, तो आप एक अच्छा trauma informed care provide नहीं कर रहे हो. तो ABA या progressive ABA जिसको आजकल हम लोग कहते हैं, आज का जो ABA है वो इन parameters को forefront में रखता है, सबसे आगे. खाली बिहेवियर को देखना ये आपका काम नहीं है. एक पूरे बच्चे को देखना जहां पे उसका कम्युनिकेशन, उसकी लीड, उसका yes to therapy, all the staff training and creating a safe environment is your responsibility as a provider. दूसरा, जब हम थेरेपीज करते हैं या जब हम किसी के साथ काम करते हैं तो we always try to prevent secondary trauma. अगर हम ये देख रहे हैं कि किसी बच्चे के साथ आप काम कर रहे हो लेकिन उधर से उसको कोई ट्रॉमा दे रहा है, चाहे वो लाउड वॉइस हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे इमोशनल हो, तो ये हमारी एज ABA प्रोफेशनल्स या एज साइकोलॉजिस्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि सेकेंडरी ट्रॉमा हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है, क्या एक इन्फॉर्म्ड वर्कफोर्स बिल्ड करना हमारा काम है? Absolutely forefront में. That is the reason we are here today, Clelia, and that is the reason I quickly said yes to you and 8 other people said yes as well. So thank you for having us here. तीसरा, पेशेंट को ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व करना, अगर वो वर्बल वोकल है, नहीं तो उसके गार्डियन को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है. तीसरा, हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी behaviors are not without a reason. There is always a possible trauma or a possible difference or a possible difficulty that problem behaviors come in. This is Atmika. So सबसे I can see your first slide. Ipshita, Now can you it's see my trauma informed care? It's just changed right now, ma'am. इसके पहले नहीं change हो रहा था. It's just changed अभी. इसके Okay. पहले हम लोग बस first slide देख रहे थे.
So I'm sorry, then I'm going to go with this presentation style because it's not changing when I'm doing it the other way. ठीक है. So I was talking about ABA-based approaches, science of learning, special value in autism, and successfully used by many people. I was trying to show this slide and saying पुराने ज़माने में खाली A, B और C सोचा जाता था, लेकिन अब ये एक complex thought process आ गई है जहाँ पे sensory difference, motivation, पुरानी learning histories और skills जो बच्चे में है या नहीं है वो देखे जाते हैं. What I was talking about trauma-informed care are these 10 key ingredients. The child should lead and communicate. We should engage the patient in planning. We should train all staff. We should create a safe environment, definitely prevent secondary trauma. And we should hire or build an informed workforce, involve patient in the treatment if they are vocal, verbal, or the guardian. Definitely look कि क्या वजह है, कहाँ trauma है, कहाँ difference है, जहाँ पे जिस वजह से ये problem behaviors या behavior deficits निकले हैं, and always try to use trauma specific treatment. अगर कोई trauma has created anxiety, then we keep that in mind, especially in this chart, and say इसको ध्यान में रखते हुए हम A, B और C evaluate करेंगे. So trauma-informed care becomes a foundation or a bottom line for progressive applied behavior analysis. So thank you for asking your question. It's changed like day and night. So do understand that जो भी ABA के बारे में myths promote कर रहा है या बोल रहा है, वो नए वाले प्रोग्रेसिव ABA के बारे में बोल रहा है कि वो 50 साल पुरानी चीजें लेके और अपने को इन्फॉर्म नहीं रख रहा, लेकिन उसके बारे में बात कर रहा है. So still very many doctors, very many professionals, very many outsiders who are just Googling and YouTubing, they are seeing a very, very old version of what applied behavior analysis was versus what it looks now. Of course, एक सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा कहती हूँ और मैं फिर कहूँगी is that कि कोई भी काम या कोई भी लर्निंग एक बंदे की अकेली नहीं हो सकती. It cannot be a one-person job. There will always be partners that have to work together to be effective. So today, I invite each one of you, and I also invite each one of the professionals that are listening to me in terms of applied behavior analysis to actually engage as partners and make sure कि हम एक बच्चे के साथ या एक बड़े के साथ जब अप्लाइड बिहेवियर एनालिटिक या साइकोलॉजिकल थेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी दे रहे हैं तो हम एक पार्टनर की तरह उसको डिलीवर करें और उसको एक ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड केयर के फाउंडेशन पे बेस करें. Any questions you have on trauma informed care? Hello. Ma'am, am I audible? Yes, Dr. Manoj, you are. Yes. It was very nice to listen you, ma'am, about the change that has occurred in the ABA in the last few decades. But my question is, if we go back, the ABA, how it was being practiced earlier, at that time also the therapists have been using the psychoeducation to educate the family members and to educate the patient. Without that, it would be very difficult to move into ABA. So how it is different from that psychoeducation that usually we use in different form of therapies, because without that, no therapy can alone stand. Right. That is my query, ma'am. Right. Thank you, Dr. Manoj. I think you lead me into my next slide as well. कि trauma informed care करना चाहिए, applied behavior analysis इसको foundation बना के इसको एक नजर इस पे रखती है. दूसरा, पहले भी हम पार्टनरशिप करते थे, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते थे, तो क्यों ये एक सिंपल ट्रेडिशनल बिहेवियरल मॉडिफिकेशन या साइको एजुकेशनल वर्क से डिफरेंट होगा? आई थिंक इट इज नॉट वेरी डिफरेंट, बट इट हैज इनसाइड ऑफ इट समथिंग विच इज मोर additional to pure
The slides are not visible. Are the slides visible? Trauma informed care वाली slide भेजी हुई। हाँ, Maximize them, ma'am. yeah, that's right. So why is it different? I think you will know in the coming. I'm going to explain a little bit of it. But अगर आप आज के बाद अगले 3 दिन सुनेंगे, तो शायद उसमें differences आपको spot करने पड़ेंगे कि क्या है. आज मैं बताने की कोशिश करूंगी कि क्या different है और क्यों different है. ठीक है? Applied behavior analysis का एक bottom line जो हम कोशिश करेंगे, वो है कि client is successful or not successful. Is the client need a focus or not a focus? Is client comfort present or not present? Is there a partnership of listening with parents and professionals or not? अगर हम पुराने डॉक्टर देखें या पुराने स्ट्रेटजीज देखें या पुराने साइकोथेरेपिस्ट देखें या पुराने बिहेवियर एनालिटिक प्रोफेशनल्स देखें, तो वहां पे एक बड़ी टॉप डाउन अप्रोच होती थी. हम बोल रहे हैं आप कर लीजिए. कहीं ना कहीं जो प्रोग्रेसिव अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस आ रहा है, वहां पे द क्लाइंट एज अ फोकस एरिया becomes very, very important, even more important than what is right and what is wrong. This listening between parents and professionals becomes as important as teaching the skill that you want. So बहुत एक humanistic angle जो है उसमें emerge हो रहा है. Why AB approach is different? It actually nurtures a child-parent or a student-teacher relationship. What does it want to do? It wants you to be able to live the most happy life that you can and be able to communicate, be comfortable, and contribute to the society in manner which we want. अगर हम ये basic अपना foundation रखेंगे या goal रखेंगे कि जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, उससे हम relationship build कर रहे हैं, communication उसका improve हो, वो comfortable हो और वो contribute कर सके society को, तो ये फाउंडेशनल गोल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. What differentiates ABA approaches from traditional psychoeducational work? Basic principles हैं जिनमें काफी deeper research हुआ है. These principles are of course very, very old in their research, but newer ones are emerging every day. There are lots of basic strategies that have been researched and have become effective, but there is a continuous work going on newer strategy coming in. The most important thing that differentiates traditional special education or traditional psychotherapy or traditional applied behavior analysis, I don't want to really say, is that it becomes based on socially valid functional goals for the person that you're working with. पुराने जमाने में अगर मुझे ABCD सिखाना था तो मैं ABCD सिखाता था. बच्चे को उसका मायने है, उसका मायने नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता. उसकी उम्र है, उसकी उम्र नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता. आज की तारीख में जब हम गोल्स ऑफ ABA थेरेपी निकालना चाहेंगे या किसी भी थेरेपी की निकालना चाहेंगे और ABA अप्रोच यूज करना चाहेंगे, अगर वो सोशली वैलिड फंक्शनल गोल नहीं है बच्चे के लिए या फैमिली के लिए, तो हम ABA की प्रोग्रेसिव अप्रोच से हट रहे हैं. दूसरा, अगर हम जो स्ट्रैटेजीज बोल रहे हैं ये कर लीजिए वैसे कर लीजिए, वो मैंने अपने ग्रैंडमदर से सीखी है, तो वो एविडेंस बेस्ड नहीं मानी जाएगी. यूजफुल हो सकती है, सही भी हो सकती है, कर भी सकते हैं, लेकिन उसको एविडेंस बेस्ड अप्रोच नहीं कहेंगे. एविडेंस बेस्ड अप्रोच तब हो जाती है जब उसके पीछे एक बेसिक साइंस का हाथ हो, एक बेसिक रिसर्च का हाथ हो और दूसरे लोगों ने यूज करी हो, या अगर आप यूज कर रहे हैं उसको एज अ न्यू स्ट्रेटजी तो आप उसको मेथोडिकली स्टडी करके यूज कर रहे हैं. खाली मुझे आती है इसलिए मैं कर रहा हूं, ये उसको एविडेंस बेस्ड अप्रोच नहीं बनाता. तीसरा और चौथा, एक्चुअली पांचवा, एक स्ट्रॉन्ग डिफरेंशिएटर डॉक्टर मनोज आता है जहां पे डेटा बेस्ड वर्क करते हैं. तो डेटा 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 ABA वाले लोग बड़ा सारा टाइम डेटा करते हैं और ये माना जाता है कि बच्चे के साथ काम करें या डेटा के साथ काम करें. राइट? हाउ डू वी फ्लो बेटर फॉर द चाइल्ड?
डेटा बेस्ड कस्टमाइजेशन अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस में एक बॉटम लाइन की तरह आता है। अगर आप नोट नहीं कर रहे या इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कि आप जो गोल लेके चल रहे हैं, आप जो स्ट्रैटेजी कर रहे हैं या जो प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं, उसका इस पर्टिकुलर बच्चे पे या इस पर्टिकुलर पर्सन पे क्या इफेक्ट आ रहा है, और आप वो करे जा रहे हैं महीनों, सालों, फॉर डेकेड्स टुगेदर, तो आप डेटा बेस्ड कस्टमाइजेशन नहीं कर रहे हैं, तो वो अप्लाइड बिहेवियर एनालिटिक वर्क नहीं कहला सकता। ट्रेडिशनल एजुकेशनल थेरेपीज में इतना कस्टमाइजेशन या डेटा टेकिंग पे फोकस नहीं है, पर क्या अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस में इतना फोकस है डेटा पे कि थेरेपीज ही खराब हो जाए? Can you still hear me? Yeah, We ma'am. can hear you. Yes. All right. So क्या डेटा बेस्ड कस्टमाइजेशन में इतना डेटा पे फोकस करें कि थेरेपीज ही अच्छी ना रहे? ये भी नहीं है, और मैं इसके बारे में आगे बात करती हूँ, पर फाउंडेशन still remains data-based customization, and you'll hear a lot more about it in the coming presentations that come in. तीसरी चीज, ABA approaches effective हैं, evidence based मानी गई हैं, रिसर्च कहता है, दुनिया कहती है। इसका जो एक ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड एंगल था वो थोड़ा सा पुअर था पुराने वाले जमाने में। इसको जब हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, दे आर एक्चुअली द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग मेथडोलॉजीज, और इसको जब पूरी टीम यूज करती है इसके प्रिंसिपल्स या स्ट्रेटजीज को, तो उसका बच्चे पे काफी असर आता है in terms of speed of learning, in terms of saving money, in terms of time being saved, in terms of skill deficits being covered, and some behavior reduction if required or replacement if required. So basic principles, Dr. Manoj, does this broadly answer, but over the next 3 days, I think in the group discussion, you can bring back this question and say कि फिर बताइए क्या difference है, तो फिर सोचेंगे. Yeah, sure, ma'am. आज- Sure. Okay. Does this answer थोड़ा बहुत आपका Yes. question? We'll have more discussion in coming 3 We days. should have more discussion, and we have kept time for it, and we will discuss it. Yes. The basic principles, and you all have studied this, so I'm going to quickly go through them, are the basic principles of conditioning, reinforcement, extinction, punishment, and functions of behaviors, that every behavior has a particular function for a child or a person, और फिर उस पे कैसे काम किया जाता है. These basic principles, आप इसको ऐसे ही ध्यान में रखिए लाइन में, और हर जगह में आपको थोड़ा सा आगे जाके जैसे जैसे एक presenter present करेगा, each of this is coming as a presentation to you. So I'm very broadly speaking, the conditioning is done to pair unconditioned stimulus and neutral stimulus. Reinforcement is done to increase behavior. Extinction is a process to reduce behavior. Punishment is a process to again reduce behaviors. And then always function-based work on behaviors will give better results. And Ipshita will talk more about it in day 2, I think. What are the broad ABA strategies? And there are many more that I haven't written here. But मैं आपसे आज ये चाहूंगी, as I introduce ABA, I want you to remember at least this big white word, that there are basic principles, there are ABA strategies. The strategies can be reinforcement-based strategies and to increase behaviors, and they can be non-punishment procedures to decrease behaviors. So strategies can be many, और अगले 3 दिन में आप इनमें हर स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा 1 घंटा इलैबोरेशन में सुनेंगे. और स्ट्रैटेजीज काफी सारी हैं in the bag. These are some that I have outlined, but you'll hear a lot more in the coming months. So antecedent strategies are strategies that work in before the behavior. Token economy is a visual strategy to support and aid. Self-management strategies are present, and shaping and chaining is again a strategy. I think special education में, psychology में, a lot of these are mentioned, but आप इसको देखें clinically, हम लोग ABA में कैसे use करते हैं और उसमें क्या
gaps या differences हैं. मेरे हिसाब से Dr. Manoj, the depth is very different, and so we'll see how things go in the days to come. Want to elaborate a little bit more on socially valid functional goals. Socially valid functional goals का मतलब है कि बच्चे की जिंदगी में आपने जो गोल लिया है वो कितना इम्पोर्टेंट है, उस पेरेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, सोसाइटी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है. इनको इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब लिया जाता है और उसमें वे किया जाता है कि क्या ये बच्चे को नुकसान देगा या फायदा देगा, ये पेरेंट को नुकसान देगा या फायदा देगा, सोसाइटी को नुकसान देगा, और कौन सी चीज पहले कंसिडर करें. ऑलवेज चाइल्ड फर्स्ट इज आवर स्ट्रेटजी एंड दैट इज हाउ इट शुड बी यूज्ड. ठीक है. अगर मैं किसी बच्चे को मल्टीप्लिकेशन सिखाना चाहती हूँ, बट दैट चाइल्ड इज नॉट येट communicating how many things he wants to eat. So suppose he wants to eat 2 toffees or he wants to eat some more popcorns. अगर मैं नंबर कॉन्सेप्ट फंक्शनल कम्युनिकेशन में नहीं सिखा रही, लेकिन मैं मल्टीप्लिकेशन लेवल पे जा रही हूँ, तो मैं उस बच्चे की नीड को ध्यान नहीं रख रही, या उसमें सोशल वैलिडिटी नहीं है. जिसके लिए फायदा होना चाहिए, अगर उसके लिए आपका गोल यूजफुल नहीं है, तो वो एक सोशली वैलिड फंक्शनल गोल नहीं होगा. अगर एक बच्चा सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स दिखा रहा है, सपोज हैंड फ्लैप आ रहा है, या वो सेल्फ टॉक कर रहा है, या वो तो वॉकिंग कर रहा है, फॉर वॉट एवर रीजन, और मैं कहूँ कि ये क्योंकि ये ठीक दिखते नहीं है इसलिए मुझे इन गोल्स पे काम करना चाहिए, या ये सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती तो मुझे इसलिए काम करना चाहिए. नॉट अंडरस्टैंडिंग that for the child all the behaviors have a function. उस बच्चे में अगर हम वो फंक्शन सुने बिना समझे बिना काम करें, और खाली दिखता अच्छा नहीं है पेरेंट को या सोसाइटी में वो स्टैंड आउट नहीं करता, खाली उस वजह से अगर हम बदलने की कोशिश करते हैं, तो हम सोशली वैलिड फंक्शनल गोल नहीं ले रहे. अगर मैं ये कहती हूँ कि मेरे सेंटर में तो बहुत अच्छे से बैठ के काम खत्म करता है, लेकिन अगर वो बाहर जा रहा है और वो स्किल्स नहीं दिखा रहा, तो the person who's telling me, suppose the parent comes and says, ma'am, he's responding to you, but outside he's not working, then will I say, no, I have done therapy, this is the goal achieved, it is fine? I can't. जिस सेटिंग में उसको वो स्किल यूज करनी है जो उसको रुक के देख के सुन के फायदा दे सकती है, if in that setting he's not using that skill, then I as a therapist can't say that I have made socially valid change. So social validity एक बहुत strong bottom line की तरह हमारे दिमाग में घूमनी चाहिए जब हम applied behavior analytic work कर रहे हैं. डेटा का रोल applied behavior analysis में बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये आपको एक इनसाइड पिक्चर दे सकता है टू इज द मूवमेंट हैपनिंग और इज द मूवमेंट नॉट हैपनिंग. शुड यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ वर्क or should you keep doing the same work for a little longer? Something that had worked earlier, if you face the same difficulty, if you have kept data, you will remember this and you can put in the interventions in place with slight modifications. Data actually becomes very, very important, but the big but is it should be simple enough. It should not override therapies. It should not override the child. But simple data taking for effective decision making is very, very, very important. The applied behavior analysis is different because it has the word analysis in it. Means whatever data that we are taking while we are intervening, when we make it, we graph it, we actually watch it and we analyze it. Okay, there is a visual analysis component and Shraddha will talk more about it as you look at measurement and graph this afternoon. So analysis is what makes all the difference. Should we modify the intervention? Should we continue the intervention? Should we change something in the strategies? What else is there in the research database or
in the field, in the new current field that we should use or not use. So data ka importance, I can't tell much, but remember, it should be simple. It should give you the information that you need to make an effective decision for your client, and analysis becomes as important. खाली data लेने से काम नहीं होता अगर आप उसको analysis करके modify या continue intervention नहीं कर रहे हैं. ABA then is an effective strategy, or it should be modified by data and analysis to be effective for a child, and the bottom line remains as data-based decision making. I would like to introduce only this much because each part of this is going to get introduced to you along the next 3 days. So I think I'm just going to open for maybe 4 minutes, and then we'll go into early intervention and autism and applied behavior analysis role in autism and early intervention. Any questions? Yes, Jharna, go ahead. Yes, ma'am. It's lovely to hear you. And just a question that when we are like doing it on the tabletop, till the time we are giving them the therapies and, you know, preparing them for the school, I mean, school readiness and all those things, they are perfectly fine. They are behaving as and like what we want, they're doing it, right? But as and when they enter their zone of school, then again they have that, you know, hitting, pushing, their behavior. And the teachers, the children, there is no sensitization. That's a different thing. Right. But how do we do that situation? Yes, I think Jharna, you hold a very, very, very valid question, and this is just for every clinician who's working in the field. You know, when you step out of the door, what do you do of the world? How do you manipulate the world to be like the therapy center? Or how do you manipulate the sensitization that you as a therapist have towards your child? How do you make the rest of the world do what you are doing, or, you know, see what you are seeing, or behave in a particular manner that we are all behaving as therapists? I think that brings to us concept of generalization, of setting, of people, of stimuli. As I talk on early intervention, Jharna, I think a part of it will get answered. But what I want to say, that the road is rough, right? The steps are too many. The difference between a therapy centers and skills exhibited in therapy center is one place, and to go into the school is another. In an ideal world, this bridge between the therapy center and the outside world, many therapists or many clinicians and many experts should be sitting on this therapy bridge, you know, जो generalization को ध्यान रखते हैं. In applied behavior analysis, one bottom line is that no skill is acquired till it is acquired across 2 settings, across 2 people, across 2 stimuli. एक ऐसा ना एक बॉटम लाइन सा बनता है एबीए में कि अगर मेरे से मांगता है तो घर जाके आपसे भी मांगेगा, अगर मेरे साथ बैठता है तो स्कूल में जाके टीचर के साथ भी बैठेगा. But I think what has happened is swimming is taught in the swimming pool, and then people are thrown in the ocean, right? Yes, ma'am, got it. So what should you do? You should make the swimming pool a little more rough, a little more naturalistic, right? You can swim on a windy day, you can swim on a rainy day, right? So how, मतलब मैं ये कह नहीं रही कि ऐसा हम कर सकते हैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ. अगर आप अपने थेरेपी सेंटर्स को जैसा नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके क्लोजर ले जाएंगे, cabins are not there, tables are not locked, lots of extra play material is available, there is lots of noise, there are lots of people. जितना जिस natural environment में जाके
उस बच्चे को वो स्किल एग्जिबिट करनी है, आप अपने क्लिनिकल एरिया को उसकी तरह बना सकते हैं। But ma'am, we are doing that in a group session, but then also the child is facing that problem. I understand that you're doing it in group sessions. What I'm saying is you can still make it as closer to natural. But in some cases, if it is not going, I think that is when the specialist has to get into the space and then help there and come out. Sometimes we are sending out our children without visual support or without cues. In that case also, you will see lack of generalization. क्योंकि ऑटिज्म में स्पेसिफिकली ये देखा जाता है कि मेरी शक्ल इज व्हाट इट वर्क्स। सो जब दूसरी शक्ल आ जाती है या वो शक्ल 6 फीट दूर चली जाती है या वो बहुत नॉइजी एनवायरनमेंट में इंस्ट्रक्शंस आने लगते हैं, तो आप अगर उन दो एनवायरनमेंट के डिफरेंसेस को और माइन्यूटली ऑब्जर्व करके बिल्ट इन कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स द लास्ट स्ट्रॉ इज कैन बी generalize into the natural space. But अगर हमारे पास इतना वक्त होता और इतने लोग होते, आज यहाँ पे there are 80 other people or 85 other people, possibly we have to be thousands of us to stand on that bridge, to be able to have enough people in all levels कि ठीक है, आपका काम खाली generalization कराना है, हम सिखा देंगे, हम experts हैं, लेकिन ये वाली चीज आप इसको क्लास में जाके कराते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा काम हमारे सामने है, टू बिल्ड रिसोर्स पीपल, टू हैव रिसोर्स पीपल, टू सेंसिटाइज, बट वन स्टेप एट अ टाइम। अभी तो झरना जहाँ पे मैं देखती हूँ, इवन इन थेरेपी सेंटर्स, पीपल आर स्टिल वर्किंग इन लॉक्ड चेयर्स, इन क्लोज्ड कैबिन्स, इन नॉइज फ्री एनवायरनमेंट, in one question being asked the one way, and even sometimes in my own clinics I can't change this. So अभी तो हम अगर हम अवेयर हो जाएं और ये ध्यान रखें कि इस बच्चे को ये स्किल यूज कहाँ करनी है, सोशल वैलिड बिहेवियर कैसा होगा, किस एनवायरनमेंट में होगा, जब आप उसको अपने गोल्स में ध्यान रखना शुरू कर दोगे तो सक्सेस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। Remember the pool and the ocean? Make your swimmer so strong, or you make your pool as turbulent as possible. Those are the two things I always think when I think of generalization. या आप अपनी skills और fluency इतनी बढ़ा दे कि वो हर जगह पे जाके उसको exhibit कर सके, या आप अपने एनवायरनमेंट को धीरे धीरे मॉडिफाई करते जाइए कि वो एज क्लोज टू नेचुरल एनवायरनमेंट आ जाए, या फिर एक ऐसा रिसोर्स पर्सन क्रिएट करें जो आपको ब्रिज करके वहां पे काम कर देगा। मैम सुजाता, मुझे एक क्वेश्चन है, नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब क्या? मतलब कौन सा एनवायरनमेंट? जो घर का है वो, मतलब हर एनवायरनमेंट तो अलग है, हर घर का एनवायरनमेंट अलग है, तो नेचुरल मतलब क्या करेंगे हम? क्योंकि हर जगह वही सुनाई देता है, नेचुरल में सिखाओ। अच्छा सुजाता, तो ऐसा सोचते हैं, ठीक है, कि अगर आपके साथ एक स्किल वो यूज करता है ना, कोई भी एक स्किल अगर हम लें, कम्युनिकेट प्ले की ले लें, अगर आपके साथ वो प्ले डो से खेलने लग गया, ठीक है, लेकिन उसका नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ प्ले कहाँ है? अपने घर में। तो हर स्किल का नेचुरल एनवायरनमेंट अलग होगा, जहां पे उस स्किल को एग्जिबिट करने की जरूरत है वो उसका नेचुरल एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो घर में क्या क्यूज प्रेजेंट नहीं होते, कोई डब्बा ला के नहीं देता, कोई बोलता नहीं अच्छा खेल लो, अच्छा टाइम हो गया, कोई वो वहां पे एक कोने में डब्बा पड़ा रहता है, बच्चे को ये रियलाइज करना है कि मैं खाली हूँ, डब्बा वहां पड़ा है, मुझे उठाना है, मुझे खेलना है, ठीक है। अगर हम ये चीज ध्यान में रखते हुए अपनी स्किल टीच करेंगे और टेबल टॉप पे प्लेडो को डब्बा खोल के उसको पकड़ा के और कहेंगे रोल करो, कट करो, गोला बनाओ, लड्डू बनाओ, डॉल बनाओ, कटिंग स्टेंसिल्स यूज करो, अगर हम वहां तक टीच कर रहे हैं तो हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप
खाली छोड़ रहे हैं, कि जब आप खाली हो अपने आप अपना एनवायरनमेंट ढूंढो, प्ले डो, अगर पढ़ा है तो उठा लो, नहीं पढ़ा तो मांग लो, उसको लेके बैठ जाओ, अगर काटने की चीज नहीं है तो किचन से मांग के ले आओ, या वो डब्बा जो कटर्स का है वो खोल लो. So when you say natural environment, when you're planning your goal, think where the child will use. Create a natural environment as much as possible. Does that make sense? Yes, ma'am. Thank you. And ma'am. this you can take any example. अगर आप इंडिपेंडेंट कंप्लीशन पे करें तो स्कूल में क्या क्या पढ़ा होगा उस नेचुरल. सो नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? नेचुरल एनवायरनमेंट है जिसमें लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉम्प्ट्स आर अवेलेबल टू गेट स्टार्टेड. People can be different, known or unknown. And natural is जहां पे वो स्किल एग्जिबिट करने की जरूरत पड़ती है. बट यस, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग. सब कहते रहते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में पढ़ाओ, पर मतलब क्या है उसका? देखते हैं. लेट्स सी. Are there any other questions, or can I go into my, because I have half my presentation left? Okay, ma'am. All right. Okay. Back. Let's look at what happens in autism. I know that many of you know, but bear with me if I repeat. Can you see my screen? Can you see a slide called Neuroscience Suggests 0 to 5 years of age? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. So neuroscience suggests that in the 0 to 5 years of age, it is a period of rapid development. There is a lot of pruning of neuronal connections, and all the extra connections in the brain get pruned, means extra noise reduces, and all the important channels actually form connections. These connections are what we call as understanding, receptive, expressive, cognition, imitation, independent, routines, personal skills, independent skills. All these behaviors are set of behaviors that are connected to each other, either from the visual to the motor, to the auditory, to the motor, to the auditory, to the visual. मतलब सारे brains के parts को जो connections connect करते हैं, ये सारे एक बहुत rapid stage पे बनते हैं between 0 to 5 years of age. Of course, these connections are always getting pruned, and they're always getting formed all through the lifespan of a person, right? Only when the degeneration starts, say after, and degeneration सबका अलग-अलग age पे होता है, but after 80 is when possibly no new connections, no pruning, but उसमें भी अब माना जाता है कि वो भी सच नहीं है. तो 0 to 5 years में ये एक बहुत rapid stage of development है, but this process continues for life and in every child. और इसको हम actually in non-neuroscientific language हम learning कहते हैं, या हम focus कहते हैं, या हम cognition कहते हैं, या हम understanding कहते हैं. In autism, this developmental patterns is changed. The pruning, the connections, because of basic sensory differences, either in the auditory or in the visual or in the motor areas. These sensory differences actually create a kind of a halt in these connections, either being pruned, the extra noises going away, or these connections also being formed. And hence, एक period जहाँ पे एक बहुत rapid development होना चाहिए in social communication, cognition, वो कहीं ना कहीं stall होता जाता है. ठीक है? So neuroscience ये कहती है कि early intervention is very, very important because of this rapid development, especially in autism. So early diagnosis, fortunately now, has started happening for us, but early intervention is still a little far away. Why use applied behavior analysis in there? Is because it is effective, it is scientific, it is evidence-based, and it can methodically break learning
into very many small parts, take data on how each child is learning, and change by other methodologies that the other researchers or other people in India or abroad have made and picked up. So it becomes a very strong evidence-based intervention in children with autism or other developmental delays. One way, of course, is pivotal response training or naturalistic training. The way we work in children with autism is that motivation is a goal. But in children with autism, motivation is very atypical or very different. And it is very hard to manipulate that motivation or to understand that motivation, or sometimes even if we understand, to give in to that motivation. So a naturalistic way of intervention in autism is that a child's choice is kept first. Then there is a natural task variation that happens inside of that, and there will be a natural reinforcement that is present. So external reinforcement की तरह जगह एक natural activity reinforcement इसमें आता है. इसमें interspersal of easy and hard tasks होते हैं, and सबसे डिफरेंट ये होता है कि सही होंगे तब reinforcement की जगह आप जो भी attempt करोगे उसमें एक reinforcement natural activity के continuation में होगा, and it becomes a strong motivational package. The other way we are doing intervention in autism is called the discrete trial teaching, where there is a beginning, there is a behavior, and there is an end. अगर सही direction में जा रहे हैं तो reinforcer आएगा, अगर नहीं कर पा रहे या सही direction में नहीं जा रहे तो reinforcer नहीं आएगा. इसमें एक और चीज जो अंदर आती है वो ये आती है कि यहाँ पे आपकी prompting और teaching strategies आती हैं, ताकि mostly बच्चा stays correct and the reinforcer comes his way. So there are simple differences between a naturalistic pivotal response training and discrete trial teaching. All right. तीसरा concept जो autism में हम use करते हैं in early intervention is errorless teaching. अगर हम ये वाला ग्राफ देखते हैं तो इसमें बच्चा अगर गलत करता है तो कोई reinforcer नहीं आता. हम ये सोचते हैं बच्चा फिर सीख जाएगा कि ऐसे नहीं करना चाहिए, बट इससे बच्चे को कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है और फिर उससे प्रॉब्लम बिहेवियर्स एलिसिट होते हैं और फिर उससे escape related behaviors elicit होते हैं और फिर tantrum, not wanting to learn, not wanting to study is what doesn't come. So one other point in early autism that we learn is errorless learning. इसमें the number of errors are reduced by using most to least prompts, and I think when prompting gets explained to you they will do more of it. But जो नीचे वाला रास्ता है, we don't let the child go that way. When we tell him to do something, we prompt immediately and fully, such that the correct response comes and the child is reinforced. Especially in early learners, errorless learning has a lot of value. Because a lot of time, autism में motivation is different, learning is hard, prompting is delayed, और बहुत सारा what do we say learning करना पड़ता है. अगर हम एक normal बच्चे की learning trials देखें तो 1 घंटे में 5 होती हैं. अगर हम autism की therapy देखें या किसी भी therapeutic situation में बच्चे देखें तो हम कम से कम उनको 50 बार या 50 times trials कराते हैं. So we do 10 times, 20 times, 30 times more trials in children with delays than we do with normal children. If you take neurotypical children and try to do 50 trials with them, they'll all have problem behaviors. So I think when we are working with children, one sentence that you have to learn, that in early intervention, please use errorless learning. Don't keep testing the child. Help early, help fast, go from most to least prompt. Okay? What it does is that it makes the child successful. There is some self-motivation,
reinforcement, play, joy that keeps coming continuously, it increases the time that is available to focus on being correct, being right, being successful, and doing more number of trials rather than reducing behaviors. अगर हम least to most prompt करते हैं और बच्चा frustrate हो गया, तो then for some time we are only going to be able to manage the behaviors. We'll not be able to use instruction time to teach. So to increase that time available for instruction, use errorless teaching and use a most to least prompt. When we are working with children, the more number of errors that you allow to happen. So मैंने कहा करो, बच्चे ने गलती की, तो उसने एक गलती प्रैक्टिस करी. चाहे आप उसको reinforce कर रहे हैं, चाहे नहीं कर रहे हैं, चाहे आप उसको डांट रहे हैं, चाहे आप उसको कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो मोटर बिहेवियर है, उसने एक गलत आंसर प्रैक्टिस कर लिया. सपोज मैं किसी को ए लिखने को कह रही हूँ और वो एक सर्कल बना रहा है और वो गलती कर रहा है, पर उसने एक प्रैक्टिस ऑफ सर्कल कर ली. तो जितनी बार अगर आप सिखा रहे हैं और एररलेस टीचिंग नहीं कर रहे या जल्दी प्रॉम्प्ट नहीं दे रहे ऑन स्किल्स जो बच्चे को अभी तक नहीं आई हैं, आप उसकी मोटर बिहेवियर ऑफ एरर्स को बार बार प्रैक्टिस करा रहे हैं. एंड दैट इज वाई जब आपके बच्चे की स्किल्स लेस देन 2 years of age होती हैं, कोई भी स्किल, इमिटेशन, राइटिंग, स्क्रिप्लिंग, talking, communicating, comprehension, any skill that you're working on, make sure errors are not practiced more than correct responses. मतलब मैंने आपसे पूछा applied behavior analysis में what is EO, ठीक है, और मैं आपको guess करने देती हूँ. एक बंदा कहता है ये, एक बंदा कहता है वो, एक बंदा कहता है वो, और सब गलत आंसर्स हैं. तो मैं आपको प्रैक्टिस करने दे रही हूँ एरर्स, जबकि मुझे पता है शायद आपको ईओ नहीं आता. तो मैं कहूंगी अच्छा मुझे बताइएगा ईओ क्या होता है, ईओ का फुल फॉर्म क्या है. तो मैं आपको हेल्प करूंगी और कहूंगी एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशंस, ये मोटिवेशन का एक पार्ट है. अगर मैं आपको फट से प्रॉम्प्ट कर देती हूँ तो आप गलत 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 नहीं सुन रहे, आप एक सही आंसर सुन रहे हैं. तो मैं आपके थिंकिंग को एरर्स प्रैक्टिस करने का मौका नहीं दे रही हूँ और करेक्ट हेल्प जल्दी ऑफर कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आपको नहीं आता. दिस इज कॉल्ड एररलेस लर्निंग विद मोस्ट टू लीस्ट प्रॉम्प्ट. इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ टाइम अवेलेबल फॉर टीचिंग फर्दर instead of focusing on reducing inappropriate behaviors, and it makes you practice the errors less and correct ones more. It makes general learning more joyful. When we look at early intervention in autism, what do? We review the child. We put in a 5-step process of intervention where we do assessment. We take a socially valid goal. We think of what interventions we can put in place. We take data on कि ये हमने 5 दिन काम कर लिया, क्या डेटा आ रहा है हमारे पास, हम उसका विजुअल एनालिसिस करते हैं और हम फिर उसके आगे स्ट्रैटेजीज चेंज करेंगे. जो भी स्ट्रैटेजीज हम डालना चाहते हैं कि हम एंटीसीडेंट स्ट्रैटेजी डालें कि हम डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट डालें या जो अदर स्ट्रैटेजीज दैट यू विल लर्न ओवर द नेक्स्ट 3 days. So in autism and early learners, when we are choosing socially valid functional goals, look at the differences through the DSM-5 criteria. What are the core deficits in autism? There is social communication and social interaction challenges. Communication, social play, comprehension, cooperation, all comes in this domain of social communication and social interaction. ऑटिज्म के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, आप लोग सब पढ़ चुके हैं, आपको सबको पता है क्या डिफरेंसेस इसमें आते हैं. पर इन पे इंटरवेंशन में, अर्ली इंटरवेंशन में हम लोग कैसे काम करते हैं, आई एम गोइंग टू डू अ फ्यू एग्जांपल्स टुडे. The other part of DSM-5 in autism is the restrictive and repetitive interests, so which works on explorative play, repetitive rigidities, non-purposeful communication, या object manipulation, या fixations that children have,
या दे हैव वेरी गैप्स इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ज्यादा फोकस्ड होते हैं एक जगह पे, उसकी एक बिगर पिक्चर या वो नहीं पहचान पाते, या उनके अपने सेंसरी डिफरेंसेस, या तो हाइपर रिएक्टिविटी होती है या हाइपो रिएक्टिविटी होती है. सो लुकिंग एट ऑटिज्म फ्रॉम द लेंस ऑफ टू मेजर गैप एरियाज, what can we do in applied behavior analysis? In an early learner, we keep our focus first on the social communication and social interaction process. We keep our focus on communication, on social play, on co-regulation and comprehension. तो अगर हम अर्ली इंटरवेंशन में काम कर रहे हैं एक ऑटिज्म वाले बच्चे के साथ इन अर्ली लर्नर, तो इन 4 फाउंडेशनल डोमेन्स में हमें काम करना होता है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंसेस आर वेरी वेरी सिग्निफिकेंट. ठीक है. सो व्हाट डू यू डू फर्स्ट? द फर्स्ट थिंग टू डू इज ऑब्जर्व, टॉक टू द टीम, talk to the family and identify sub goals in each area. अगर कम्युनिकेशन है तो उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या नॉन वर्बल जेस्चर्स प्रेजेंट हैं या नहीं प्रेजेंट हैं, क्या अप्रोच बिल्कुल बॉडी अप्रोचेस हैं या फेस अप की तरफ रेफरेंसिंग टाइप की अप्रोचेस हैं, क्या वोकल्स जो प्रेजेंट हैं वो जिस टाइम में उनको यूज करने हैं, जैसे अगर मुझे कुछ मांगना है और मैं कर रही हूँ, या मैं खाली हर टाइम में वोकल्स हमारे प्रेजेंट है, अपने आप चल रहे हैं, कुछ मांगना है नहीं मांगना कोई फर्क नहीं पड़ता. क्या वो बच्चा नाउन्स यूज करके अपनी चीज मांग सकता है, एक्शन वर्ड्स यूज करके अपनी चीज मांग सकता है, क्या वो हेल्प रिक्वेस्ट कर सकता है, क्या वो अगर कहीं चीज में फंस गया है या उसको किसी लोगों से बात करनी है तो वो अटेंशन रिक्रूट कर सकता है कि नहीं कर सकता. तो जब भी हम किसी बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं, हम कम्युनिकेशन के सब डोमेन्स में, एंड दीज आर ओनली सम, नॉट ऑल द एरियाज दैट आई हैव लिस्टेड, बट अर्ली इंटरवेंशन में हमें इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चे को ऑब्जर्व करना चाहिए कि कहाँ पे उसको दिक्कत आ रही है या कहाँ तक वो कर सकता है. सो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस both should be evaluated. When we are looking at social play as a subcategory, we should look at body approaches, hand approaches, eye approaches, and joint attention as well. Joint attention में subcategories आती हैं of क्या the बच्चा can initiate joint attention. Joint attention is when I share an experience with somebody. अगर मैं एक कबूतर फड़फड़ करके उड़ता हुआ देख रही हूँ, तो क्या मेरे साथ जो भी सोशल पार्टनर है, मैं ये जानती हूँ कि उसको भी वो कबूतर दिखा होगा और मैं उसकी तरफ देख के एक स्माइल दे सकती हूँ कि देखो अपन दोनों ने कबूतर देखा वाला. बोलने की जरूरत नहीं है, पर शेयरिंग ऑफ अफेक्ट, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, शेयरिंग ऑफ जॉय, शेयरिंग ऑफ अ थॉट is what joint attention is all about. So जब ये बच्चा मम्मा देखा आपने ऐसे करके कुछ बोलता है, तो उसको ये पता चलता है कि मम्मा ने भी देखा, मैंने भी देखा, और फिर वो कह रहा है कबूतर उड़ गया, तो वो इनिशिएट कर रहा है अपनी मदर की तरफ जॉइंट अटेंशन. RJA is receptive joint attention, where अगर कोई चीज देख रहा है और आपसे बोल रहा है, तो आपको समझ आता है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं. जैसे कि अगर एक ग्लास था और उसमें पानी था और वो गिर गया और मम्मा ने कहा सारा कुछ गिर गया, तो छोटे बच्चे ना ऐसे ऐसे करके कहते हैं और या ऐसे करके कुछ करते हैं कि गिर गया. तो दे आर एक्चुअली शेयरिंग द सैडनेस और द अफेक्ट और द एक्सपीरियंस कि हाँ हम दोनों एक चीज को शेयर कर रहे हैं, पर मम्मा ने इनिशिएट किया और बच्चे ने उसको रिस्पॉन्ड किया. दैट्स कॉल्ड अ रिसेप्टिव responsive joint attention. So initiating joint attention and responsive joint attention, RJA. So ऐसे हर एरिया में सब कैटेगरीज आती हैं और उन सब कैटेगरीज में हमें ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या स्ट्रेंथ एरिया है और क्या डेफिसिट एरियाज हैं. Communication I have elaborated just what it is. तो अगर हम कम्युनिकेशन में फर्दर देखें
तो requesting can be divided into pre-linguistic or verbal behavior. I think in the third day, you will hear a lot more on communication and functional communication training. So I'm not elaborating in detail. अगर आप मेरी slides के मोटे-मोटे शब्द भी ध्यान रखेंगे, तो over the next 3 days, you will hear each thing in more detail. I'm giving you one example of, is the screen big enough for you to read? All right. Okay, so then I'll continue. Any questions so far? Is there a possibility of increasing the size, because I am watching through my mobile, so I need to zoom it. Ma'am, can I share from my side? So it will be fine. You just need to say yes, then I can do that. Sorry? Can I share the PPT from my side? Yes, you can. Actually, should I stop it? Yes, ma'am. I don't see it. We can see it now. Is this bigger? Yeah, just. Yes, ma'am. Oh, okay. Thank you so much, Clelia. Ma'am, sorry for the interruption. Just a Yes. humble request, if you could put this on a read view, it will be much bigger for the audience. Ma'am, you were on which slide? I'll just tell you just next करके आप वापस start करें उसको. Ma'am, kindly send the last slide again, please. I just missed it, please. बस इसका next, but yeah, right here, I think. No, up. Further Thank up. you. No, back. One more back. Okay, yeah. So when we are looking at applied behavior analytic intervention, and I was telling you how we space out a interventional goal in early intervention. अगर मैं communication में referencing, eye contact, gesture और sound को target कर रही हूँ, तो जो भी हमारा current goal है, say requesting an item of action, I will say that when the child can request the item or an action across two people, across two settings, 100% of the time, then I'm defining a goal. So the first step in intervention will always be defining a goal. The next step in intervention will be, what is the baseline? अभी अगर मैं उसको 10 opportunities देती हूँ, तो उसमें से वो क्या करता है जब उसको communication करने की जरूरत पड़ती है. So then the child is actually pulling the hand of the caregiver. तो ना वो word बोल रहा है, ना वो action का word बोल रहा है. तो 0 out of 10 times, he's just not looking or referencing towards the person that he is the social partner. तो अगर हम define कर लें goal, हम अपना baseline बना लें, और उसके बाद हम कौन सी strategy use करेंगे such that we can teach the requesting part. So we will define that strategy and we'll write down that methodology. ठीक है? The क्या उसमें motivation का goal है, उसमें pairing करी हमने prompt कब दिया, कहाँ पे दिया, position पे दिया, क्या हमने activity करी या continue रखी, और हमने कितनी बार दिन में उसकी trials करी. Once we put the strategy in place, the intervention starts. We actually take intervention data. कि 3 दिन तक 10 मिनट हम लोग चेक करेंगे कि वो कितनी बार जब उसको जरूरत पड़ती है, out of 10 times, वो अपने मदर की तरफ रेफरेंस करता है towards the face of the mother. और उसको हम नोट कर लेंगे. अगर हम पहले दिन चेक करें तो 0 out of 10 times उसने रेफरेंस किया. अगले दिन हम चेक करें तो 2 out of the 10 times उसने चेक किया. और ऐसे हम चेक करते रहेंगे कि अगर ये नंबर ऑफ रेफरेंसेस पर डे और पर वीक बढ़ती जा रही हैं, इसका मतलब हमारा जो इंटरवेंशन स्टाइल है या स्ट्रैटेजी है या मेथड है वो इफेक्टिव है. तो देन वी विल not change the style or strategy,
we'll continue it. But अगर हमने ये ग्राफ देखा और इसमें पहले दिन भी 0 out of 10, दूसरे दिन भी 0 out of 10, तीसरे दिन भी 0 out of 10, and we've done it for a week and nothing is changing and it's stuck, then we will analyze, we'll graph it, we'll analyze it, and then we will modify a strategy and see कि क्या बदलूं मैं. Should you increase the number of trials? Should you change the prompting style? Should we see if the child is feeling not motivated, हम उसको बहुत ज़्यादा गलती करने दे रहे हैं, वो frustrate हो रहा है. What are we doing? And we modify the strategy. So especially in early intervention in autism, these become your bottom lines to teach any goal, and we work under these headings. So let's look at next slide, please. Say in social interaction, these could possibly be the sub goals that are present. They could be joy, they could be referencing, they could be joint attention, they could be following pointers, following eye gaze, following pointing to show you, and then in the end to share that emotion or the affect with you. Next step, please. In social interaction, suppose I take the goal as any of these. I choose one. Next slide, please. And I will define when called by a social partner, I want to take the target of response to name. So when called by a social partner, the child will look or say yes and imitate you, with whatever you are doing. The baseline, the child does not look or say yes when the social partner calls, or rarely, मतलब वो देख yes बोल देता है, लेकिन जब आप उसका मुंह ऐसे करो तो कहता है हाँ. So in that case, the strategy that I might use is differential reinforcement of incompatible behavior. मतलब कि दूसरी जो भी चीज कर रहा है उसको हम एक्सटिंक्शन पे डाल सकते हैं, लेकिन जब हमारी तरफ देख रहा है उसको प्रॉम्प्ट करके या जैसे भी या इतना खेल के हम उसको रीइंफोर्स कर सकते हैं. सो स्ट्रैटेजीज आप बहुत डिटेल में अभी सुनेंगे कल परसों में, लेकिन वो स्ट्रैटेजी हम यूज कर देंगे. जब हम कहाँ करेंगे इसको, जब हम खेल रहे हैं उसके साथ. सो वेयर आर वी डूइंग, व्हाट आर वी डूइंग एंड व्हाट इज द बेस लाइन करंटली. इसको जब हम नोट कर लेते हैं तो हम पूरी मेथडोलॉजी डिटेल में अपने लिए लिख लेते हैं, ताकि आप भी कर सकें, आपका दूसरा थेरेपिस्ट भी कर सके और पेरेंट भी आपके साथ ये सेम स्ट्रैटेजी फॉलो कर सके. After we've got the outline clear, we take interventional data. We've started intervention. Let's see how things are increasing. Agar the graph or the data suggests कि oh, there is an upward trend, continue. If the graph stays no movement, then we modify. So again, the strategies or the basic steps in intervention remain the same. What are the detailed strategies in each? Of course, that is to be read in more details for a specific thing, but you will hear some of them in the coming days to come. Next. In co-regulation, which is also a very, very important goal in early intervention, we are working on connecting, the child attending, child taking help, child tolerating delays, accepting no, accepting an alternative, negotiating, looking, thinking, and acting. All these are very, very socially valid goals. Tolerance is possibly one of the most socially valid goals that is present for growth. If we can tolerate a lot of things, doors open for us in new environment. If we can't regulate, or we can't tolerate, or we can't ask for help, or we are not connected, or we cannot negotiate, धीरे धीरे सारी दुनिया के दरवाजे हमारे लिए बंद होते जाते हैं. So co-regulation for me becomes a very, very important goal in early intervention. Next. Go ahead. Next. Again, we follow the same steps. You define what you're going to teach. You take baselines of what is currently happening in the child's life. You define a strategy, which is a behavior analytics strategies of shaping, and then you write the methodology. Once you write the methodology, you make sure you follow it continuously and take interventional data. Check how the child is doing and then modify or continue if the way is going according to what it should go. Next.
Comprehension, of course, is a very important early intervention goal because it connects us to the outside world. And when we understand others, it also forms a bottom line for speaking and communicating and understanding social expectations from outside. So gestures, spoken words, non-verbal cues, hidden social cues, and rule-based behaviors are very important in the comprehension aspect of language. Go ahead. Time is up, so I'm going to go really fast on this. But suppose I say I take a goal of understanding two-step instructions. Okay, give me this and that, or get me that and that. First, open your bag and take out your book, or any two-step receptive instruction. Baseline is that the child only does one out of those two things. Then what is the strategy that I would use for the child to remember a two-step instruction? So the strategies that come out of the applied behavior analytic research or evidence-based practices is attending, joint control, and positive reinforcement. We write our methodology, say during a favorite craft or cooking. When we ask for two things, we use joint control. Joint control is you listen and you speak together. So when you say, give me the fork and the orange, and we say fork and the orange, the child has to repeat fork and orange, and then he will remember the fork and the orange, or we'll help him remember the fork and orange, and we prompt him to give it to us. So methodology is written in detail, and then we see कि अगर हमने एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता उसको पढ़ाया, तो हर हफ्ते में कितना वो करेक्ट कर पा रहा है, कितने टू स्टेप कर पा रहा है, या उसको अभी भी लास्ट ही चीज याद रह रही है. As we graph that data, we analyze again and we check if our program is moving up, not moving at all, or it's worsening. Actually, all behaviors are coming in and it's becoming bad. Then we graph, analyze, and modify our strategies accordingly if needed. Next. Next. So these are just a data sheet that I was trying to show you. In terms of restrictive and repetitive interests, हाँ अगले पे आ सकते हैं, अगले पे आ सकते हैं. The second domain of DSM was restrictive and repetitive interest. What would be the socially valid replacements or functional replacements of restrictive and repetitive interests? One should be functional object and motor based skills. 2 can be explorative play. 3 can be observational social learning. 3 has to be sensory modulation or integration and desensitization. 4 can be flexibility and variability. If we work on any of these areas and we find out sub details of the same, we can go back. Can you go back up slide? One slide up. One more. We can work on a goal that comes under the domain of repetitive and restrictive interest. And suppose I work on flexibility. तो मैं उसको define करूंगी, baseline लूंगी, strategy सोचूंगी, method लिखूंगी, और interventional data लूंगी, and then I graph it at the end of the day. If needed, analyze it and modify it. Move further. आगे जा सकते हैं वापस. So just remember, these 5 to 7 steps become very, very important in taking any goal and then working through it in a behavior analytic or applied behavior analytic way. Go down further. Desensitization, especially for children, becomes very, very important. So let me give you an example. We define what it is, needed from the child. When the child is taken to the barber, the child will sit nicely for 20 minutes and tolerate the haircut without any visible discomfort. Baseline is the child tantrums as soon as we turn the road corner of the barber shop. I task analyze it. I then write each step and I see how I can use positive reinforcement and shaping to work on these steps. Okay, next. Next, I think we've already done this. We can go next. Okay, so that's it. I think I stop sharing. Allow me to share.
Can you see my presentation? No, ma'am. You are not shared. It is not coming, ma'am. I'll try one more time. Can you see now? No, ma'am. Yeah, it is. Yeah, No, it's ma'am. coming. Oh, yeah, now it's coming, ma'am. Now it's coming. All right. So what I was trying to say, that in terms of what behavior analysis does is this multi-step process, and it's followed quite rigorously. The data is simple, but it's always taken. The graphs are always followed and seen how a visual analysis is showing a trend. The modification and the evaluation using what is research based that is already available becomes actually a bottom line for applied behavior analytic work. Is it completely different from what we do? I think all the steps, when they come together, make it a applied behavior analytic intervention. Otherwise, it is some strategy, sometimes the definition is not correct, sometimes baselines are not done, sometimes the goal is not socially valid or important to the child. But when they are all stitched together is when it becomes behavior analytic and it is applied in the settings that it is needed to be used. Hope you enjoy the rest of the teaching learning journey in the next 3 days. The team is available in the group meeting time for further questions and answers that come your way. Thank you. You can also visit our website at kriyafoundation.org or email us at either information.kriya@gmail.com, bbabu@kriya@gmail.com. One thing that I would like to kind of say again is I'm so very grateful to the collaborative effort of the behavior analysts that have come together, to present to you the next 3 days of many, many, many hours. Please enjoy the learning. We are really, thankful for having this opportunity to present to all of you. And I hope it helps all of us understand each other's perspective and work together for children. Thank you so much, ma'am, for giving us your time, giving your team with us for 3 days, and sharing your in-depth knowledge on ABA and early intervention, and spending the time with your in-depth knowledge of sharing sharing the knowledge in a very simple way with small examples. It's really touching and enlightening for the people. Thank you so much, ma'am. And right, so are we taking a break or are we going into the next presentation? I am giving 5 minutes break for the participants. All right. Dear participants, we are going for a 5 minutes break. So we meet at 11:45 again? Yeah, we will be meeting at 11:45. All right. See you, Clelia. See you, ma'am. Clelia, so Yes, in future, if participants are interested, we are creating a video library to look at concepts and things. So if emails can be shared with Atmika or Shraddha and the team, we'll always, I think over a period of time, we are really thinking of how to create a database so that all of us, when we are stuck, and we are all stuck at some point or the other when we are working with children, because every child is so different, there is some intercollaborative resources that are available, between all of us as educators and psychologists and ABA professionals and educators, special educators, OTs, whoever is on the team, and parents, of course. So do share that with everybody, and then let's see how. Sure, ma'am. Sure, I will be works. sharing. Yes. I will be sharing. All right. Thank you so much. Thank you, ma'am.
Kelia ma'am, can I ask you a question? Yes, Vanilla ma'am. Just wanted to ask, like, should I be sharing the presentation or you will be sharing from your side? You want me to share, then I can share. I can share from my side. I hope I won't get any glitch. If in case something happens, then you please take over from Yeah, there. sure. All right. So I'm here. I'm available here. Okay. Just I gave them 5 minutes break, so we'll Yeah, start I heard. around 11:45. All right. And dear participants, we will be sharing the PPT and everything at the end of the day. So you can check after the sessions, like around 4:30, you all will get the PPTs in your mail. Thank you, ma'am. Please, madam, send the PPT after session. Clelia, Yes, yeah, ma'am. can we break the recordings into smaller parts? It will be, it will be like getting, we'll If you break stop, around 1 o'clock. After if two you stop sessions, the we'll be. recording, if you stop the recording now and do different parts in different these things. Okay.